अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि डॉन अखबार के हवाले से। ये डॉन अखबार जो आप लोगों ने देखा होगा कि क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स लोग जो है डॉन अखबार पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसे बहुत मुश्किल समझकर एक दिन पढ़ के, 2 दिन पढ़ के, 3 दिन पढ़ के फिर छोड़ देते हैं। बल्कि इसको छोड़ना नहीं है, चाहे आप दिन में एक ही आर्टिकल क्यों ना पढ़ो, क्योंकि कतरा कतरा दरिया बन जाता है। तो आपने मेहनत करना है। तो ये जैसे कि आज डॉन अखबार का जो हमने एक टॉपिक शुरू करना है, तो इसको थोड़ा देखेंगे। जैसे ये टॉपिक आप लोगों के सामने है, इसमें फर्स्ट है कि NLC FW टू कंटेस्ट फॉर रिंग रोड प्रोजेक्ट कंट्रैक्ट। जो रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट कंट्रैक्ट के हवाले से ये जो टॉपिक लिखी हुई है, यहाँ पे जो दो नाम फर्स्ट में लिखे हैं वो भी एब्रीवेशन में NLC FW। NLC नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल और FW फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है दो एक डिपार्टमेंट हैं और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है इसके हवाले से। तो पहले आप लोगों ने जो है ये चीज़ मेंशन करना है कि ये चीज़ ध्यान में बिठाना है कि ये जो है NLC और FW को समझना है। उसके बाद आप लोगों ने टॉपिक पूरा पढ़ना है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं आए तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो NLC के हवाले से आज इधर थोड़ा सा लिखा हो मैंने। NLC इसका शॉर्ट टर्म नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल। ये क्या है? इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी ये पाकिस्तान के लोगों को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किस तरह की सर्विसेज? मोस्टली नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल NLC गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स और फ्रॉम लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, हैदराबाद एंड कोयटा। ये जो है बड़े शहरों में काम करता है और इसके जो बेसिस हैं ये जो गवर्नमेंट बेसिस में भी जो है जॉब्स प्रोवाइड करता है और प्राइवेट बेसिस में भी जो है जॉब प्रोवाइड करता है। तो इस हवाले से अभी जो है नेशनल लॉजिस्टिक्स का जो है ये पेज आप लोगों के सामने है, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे। NLC FWO to contest for ring road project contract. Rawalpindi, the Rawalpindi Development Authority RDA will arrange a competition between National Logistics Cell and the Frontier Works Organization FWO for the award of the contract to one of them for the construction of the Rawalpindi Ring Road from Rawat to Taharian. On Tuesday, RDA Chief Engineer Dr. Habib Anwar wrote a letter to FWO and NLC to participate in the direct contracting as per PPRA Rules 59E of for the construction of the 24 km ring road worth Rs 24 billion. The competition between two government construction agencies will likely be held on Monday, March 14, the letter said. It stated that the earnest money at the rate of 2 PC of the estimated cost Rs 462, 368, 227 in the shape of CDR in favor of the Director Admin and Finance RDA must be submitted. A senior official of the Punjab government told Dawn that due to the sensitive location of the area, the provincial government had decided to award the contract to a government construction agency. He said the government organization engaged for the procurement shall accomplish the task exclusively through its owner source without involving the private sector as partner or in the form of a joint venture or as a subcontractor. He said the NLC and FWO were requested to receive the tender documents for Rawalpindi Ring Road from RDA offices by March 12 and submit them along with the financial bid and 2 separate sealed envelopes by 2 p.m. on March 14.
Strict rules have been adopted for awarding the contract as the company must have experience of development, installation, testing, commission and operation of an intelligent transport system worth at least Rs 800 million, he said. He said that the contractor company should have the capacity to implement building for information modeling for interchange construction. In this regard, experience of implementation of the BIM, Building Information Modeling, model worth Rs 2 billion is required, he said. He said all equipment required for the project must be owned by the contractor company itself. He said that there was a requirement that the company had completed at least 5 projects with similar complexity, i.e., fenced highway or fenced motorways, including interchanges and flyover completed in the last 10 years of at least Rs 25 billion. 2 projects with similar complexity, highways or motorways, including interchanges and flyover in hand at least Rs 50 billion, he said. He said the company should have an average annual construction turnover of minimum Rs 30 billion during the financial year 2020-21 and have a minimum networking capital of Rs 40 billion during the financial year 2020 and 21.